गुड इवनिंग। सो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। दैट्स गुड। सो दिस इज 8th मैथ्स क्लास. We'll start with today's lecture. So let me share my screen. So can you guys see my screen? आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? That's great. Hopefully, this is month of December. आपके यहाँ भी cold weather might have started. मतलब we are staying in northern part, so it's too cold here. I just want to give you a glimpse that today it is -6 degrees Celsius here, so you can understand it's too cold outside. But yeah, as I'm staying inside, so it is warm and yeah, I can stay good. But just give you an update that how weather changes from place to place. So here a lot of snow I can see outside. It's roads are jammed. So this is general trend in December, January, February. Here a lot of snow we can see outside. इंडिया में जनरली ये सब चीज़ें कश्मीर या हिमाचल प्रदेश वहाँ इस प्रकार का वेदर होता है. तो let's see. Yeah, just a quick update because this is early morning here and you can see a lot of snow. So just I wanted to share with you guys. Anyway, we will start with our class. We started with the division of polynomials. इसमें डिवीजन कैसे कैरी आउट करते हैं हमने स्टार्ट किया था. तो हमने देखा था कि जैसे पॉलिनोमियल, मोनोमियल, सो इस प्रकार से डिफरेंट 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 इक्वेशंस होते हैं, उनके वेरिएबल्स होते हैं. सो हमने लास्ट टाइम देखा था. फिर हमने शुरुआत की थी कि फर्स्ट डिवीजन टू डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल, मतलब हमने एक ही जिसमें वेरिएबल हो और एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं. तो एक एक ऐसे टर्म को एक से एक वाला ही दूसरा एक मोनोमियल था, उससे हमने डिवाइड करके देखा था. तो उसके बाद हमने शुरुआत की थी कि पॉलिनोमियल जहाँ बहुत सारे टर्म्स हो और उनको अ, हम मोनोमियल से डिवाइड करके देख रहे थे. ये भी हमने कवर किया था लास्ट टाइम. अगर आपको उस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में. फिर हमने शुरुआत की थी कि हाउ हाउ ऑलवेज देर इज नॉट रिमाइंडर जीरो, देर इज सम रिमाइंडर. सो उस रिमाइंडर को हम मतलब जिस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे उसके बाद सम रिमाइंडर और क्वेश्चंस मिल सकता है. सो इस प्रकार से हमने देखा था कि whenever we divide any polynomial by monomial, there may be a remainder zero or maybe remainder some value, right? So हम अभी उसके आगे देखते हैं.
So to start with, someone is asking, Vedant is asking question that, sir, will you explain practice set 10.2.5? Yes, we will. If we go there today, we will explain. Let's see how much we can cover today. So while dividing a polynomial, so this is very important property here. While dividing a polynomial, the operation of division ends when either a remainder is 0 or degree of remainder is less than degree of divisor of divisor of polynomial. So what does it mean? So let's see some. They have given some example, right? So we will study in above example. The degree of remainder 4p is less than the degree of divisor 3p square. So let's see here. Okay. So what does it mean? So remainder is 4p. Okay. And what is it? This is 3p square. So what is the index of 3p square? We know index is 2. So from last lecture, you आपको पता ही होगा कि what is meant by index of the polynomial or any monomial. So index is highest power of uh, any variable, right? So what is highest power here? 2. So this is index. So this index, and what is the index for this remainder? 1, right? So whenever there is index of remainder is 0, sorry, index is 0, right, like this, or remainder, index of remainder is less than the index of divisor. So यहाँ आप देख सकते हैं कि जो remainder का index है 1 is less than index of divisor, right? So we are good here. So यहाँ हम stop करना है, ये हमें एक पता चल जाता है. Okay. Similarly, यहाँ भी देखिए x square. So यहाँ index है 2, highest power of polynomial, right? और इसका इंडेक्स क्या है, जो भी रिमाइंडर है उसका 1, right? So 1 is less than 2. So हमारा जो भी डिवीजन है वो खत्म हो चुका है. इससे ये पता चल जाता है. अगर हम यहाँ इसके बाद अगर कुछ नहीं करेंगे, राइट, अगर हम देखेंगे कि हमें इसके बाद कुछ नहीं करना है, तो इसका इंडेक्स देखिए क्या है, 2, राइट, और ये है 2 और ये दोनों इक्वल हो गए. सो इससे क्या होता है, इससे क्या पता चला हमें कि हमें और भी इसका डिवीजन करना है, राइट. सो वेन एवर देयर इज इंडेक्स, तो हमें हमेशा देखना है कि इंडेक्स क्या है. ओके. सो सॉरी, कैन यू हियर मी अगेन? क्या आप मुझे सुन सकते हैं बराबर से? Okay. So again, where to stop for whether we should go on keep dividing the terms. So that's what we have to see. हम किसी भी टर्म को कहाँ स्टॉप करना चाहिए. जैसे अभी इसके आगे
हमें भी पता है कि एक्स स्क्वायर से 2x को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट ये अब यहाँ देखिए, ये यहाँ जो पॉलिनोमियल का इंडेक्स है वो 2 है, राइट, और हमारे डिवाइजर का इंडेक्स क्या है, 2। ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमें और डिवीजन करना है, और डिवीजन हो सकता है। ओके, इसलिए हमने फिर से यहाँ कैलकुलेट किया है, और लास्ट में जो बचा है, सो उसे उसे उसका इंडेक्स 1 है, राइट। 1 इज लेस देन 2, सो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। सो किसी ने फिर से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज इंडेक्स। सो कोई भी पॉलिनोमियल हो, ओके, लेट मी explain again about index of the polynomial. So कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे अभी एक पॉलिनोमियल हम ये देख लेते हैं, तो इसमें जो भी टर्म है उसमें जो भी वेरिएबल है, राइट, एक्स एक्स एक्स, तो उनका जो ग्रेटेस्ट पावर है, राइट, तो यहाँ ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 4। सो इस पॉलिनोमियल का इंडेक्स क्या हो गया, 4, राइट। सो इट इज ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सो जो भी हाईएस्ट नंबर है पॉलिनोमियल के uh, किसी भी वेरिएबल का पावर, राइट, दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स। अभी ये देखिए, सिर्फ इसमें हम देखते हैं, अभी मैं विल टेक अनदर कलर। सो ओके, सो अभी इसमें देखिए, व्हाट इज द इंडेक्स हियर, 2, बिकॉज इसमें और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स ही है और उसका पावर है 2। तो इस प्रकार से इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं। इट इज वेरी सिंपल टर्म where we have to find out what is the highest power of the variable. So for example, in this polynomial, see what is the index, 3। ओके, सो इस प्रकार से हम हमेशा इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, हमें जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी एंड वी कैन प्रेडिक्ट दैट व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल। इस इस मोनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2, राइट। सो इस प्रकार से हम इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, और जब तक ये इंडेक्स जो भी इंडेक्स हम ले रहे हैं, वो इंडेक्स, जैसे अभी डिवाइजर का इंडेक्स है 2, और वाइल डिवाइडिंग वॉट एवर द रिमाइंडर वी आर गेटिंग, इफ इसका इंडेक्स क्या होगा, 2, तो ये 2 जो है वो इससे कम नहीं है, राइट, रिमाइंडर का। सो हमें और डिवीजन करना है। अभी इसका इंडेक्स देखिए क्या है, 4p, p रेज टू 1 है यहाँ, सो दिस इज 1, यहाँ का इंडेक्स है 1। सो वी कैन सी दैट इंडेक्स इज लेस देन 2, सो हमारा डिवीजन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ये यहाँ से पता चलता है। Okay, so this is a very important property while dividing the polynomial. So we have to keep, means we have to see while dividing the any polynomial that how this index are changing, so that we will come to know uh, what we are doing or where to stop these dividing parts. So let's see and see some examples so that it will be more clear for you guys. So let's start with this. This is a very simple problem. We have solved some such type of problems, but let's see here what is going to happen. So can you carry out this division and type an answer in the chat box? 21m square divided by 7m.
Oh, nice to see very quick answers. That's really great. It indicates that everyone is following really well, right? So this is the division. So 3m is answer. So I will try with 3m. So what is the remainder? Remainder is 0 here. Okay. So this is a really simple problem, and I feel you guys are following really well. So what we will do, we will go for some difficult problem and check. So can we solve this problem? Problem number 7. I know it is a bit lengthy, but yeah, we have enough time to solve such type of division. So please try and try to put answer, and please don't look into the answer sheets or answers provided at the end of chapter, because that is not expected in this class. If it is wrong, that's fine. अगर कुछ answers wrong आते हैं, that's fine. Anyone is trying. Hopefully everybody is trying to get an answer. Okay, some students are writing the answers. That's great. So generally, we see by each term. So first is 2y cube. So if we 2y square into y is equal to 2y cube, right? Similarly, 2y square into 2 is equal to 4y square. So if we divide this thing, so I'm not getting in space, but let me take this up. Okay. Here we can see 2y cube plus 4y square plus 3, right? And we are dividing by 2y square, and answer is y plus 2. And if we divide, we will give 4y square 0 plus 3. So remainder is 3. That's correct. Let's try to solve some more problem.
So we will try to solve this problem number 10. So before that, just quick suggestion or quick thing I would like to share. So here remainder is 3. So for remainder 3, what is the uh, index here? Index is 0 because there is though there is some polynomial is index is 0, right? So index is 0 here, and the index of divisor is 2. So 0 is less than 2. So whatever we have calculated the remainder is correct, that it doesn't go further. So that's the indication for us. Okay. So we have solved this problem in that way, and we have checked whether there can be more division. Okay. So let's try to solve next problem, like problem number 10. So I'm just picking up the problem based on what I can see here. Okay, it looks bigger, so I'm just assuming that it is difficult. But if you have any question about any problem, please you can type in the chat box. Any answer for this problem number 10? That's good. So here you can see that how to make this division. So 5m cube into 5m gives us 25m raised to 4, right? Then 5m cube into 3 gives us 15m cube. Okay, so this is get cancelled, and whatever remaining is 10m by 8. So that is the remainder. So what is the quotient here? Quotient is 5m plus 3, and what is the remainder is 10m plus 8. Okay, so these are the answer. So here what we can observe is a remainder, right? So index of remainder is 1, right? And what is the index of divisor? It's 3. So 1 is less than 3. So we can see that this division we can stop here, and we can get the remainder. So this way we can quickly check whether we have to divide that polynomial further or we can stop.
Okay, so I will clear. So if you have any question here, you can always write in the chat box. So to divide a polynomial by binomial. So till now we were seeing the monomial where we have seen the only one variable, right? अभी तक हमने देखा कि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक ही टर्म था। सो उसी से हम डिवाइड कर रहे थे पॉलिनोमियल को। तो अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बाय बाय सजेस्ट हियर बाय मींस टू, राइट? बाइनोमियल यहाँ दो टर्म्स होगी। सो हम अभी बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं देखेंगे। सो इट इज सिंपल एज अर्लियर। सो x plus 2 here, right? So x plus 2 into x gives us x square plus 2x. And if we subtract from this term, we will get 2x plus 4. Then again, x plus 2 multiply by 2, it will give us 2x plus 4. And if we subtract from this term, we will get remainder as 0, right? So this way, it is similar way what we have calculated in earlier terms. Yes, sure. I will. If I reach there, I will try to solve those problems. 10.2. Okay. So here, binomial is this way. We can multiply to the term, and we will get the remainder as 0. So in earlier terms we have seen, हमने देखा है कि जो भी एक टर्म था मोनोमियल था उससे ही मल्टीप्लाई करते थे और जो भी आंसर आता था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ अब बाइनोमियल है, सो हमें इन जो भी बाइनोमियल में टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे x को, राइट? x plus 2 into 2 or x plus 2 into x, whatever the answer we get, that we have to subtract from the polynomial. और यहाँ अभी देख सकते हैं, यहाँ दो है तो यहाँ भी टू टर्म्स आएंगे, राइट? ये भी बाइनोमियल होगा। So that's the thing we have to be careful. So let's see some more problems. अभी यहाँ देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है y raised to 4 plus 24y minus 10 y square divided by y plus 4. So y plus 4 is one polynomial. This is binomial. Okay, so y plus 4 into y cube. Okay, so this is the highest term here. So हमने क्या किया है, अगर पॉलिनोमियल में देखेंगे तो यहाँ ये टर्म नहीं थी, तो उन्होंने for easy understanding they have kept some 0 y cube, right? It doesn't mean anything अगर हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू 0 है, बट और उन्होंने आपने देखा कि यहाँ पॉलिनोमियल हमेशा डिवीजन के वक्त जो भी इंडेक्स है उसके अनुसार उसे अरेंज करते हैं, जैसे 4 3 2 1 और आगे जो भी वैल्यू होगी। सो इट हेल्प्स अस इन दिस डिवीजन। सो अभी देखिए y plus 4 into y cube, इसका आंसर क्या होगा? y raised to 4 plus 4y cube। अगर हम इस टर्म से इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ आंसर आएगा -4y cube। अभी ये जो है वो हमने कुछ उसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो दिस विल बी द सेम थिंग, राइट?
So again, y plus 4 into minus 4y square, right? What is the answer? Minus 4y cube minus 16y square. So ये हमें यहाँ आंसर मिल गया. दिस इज अगेन बाइनोमियल. सो इस टर्म से हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 6y स्क्वायर प्लस 24y. सो y प्लस 4 से इंटू 6y करेंगे तो फिर से 6y स्क्वायर प्लस 24y आए. सो हमने यहाँ ये 6y रख दिया और यहाँ 6y स्क्वायर प्लस 24y, और 6y स्क्वायर प्लस 24y से हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 0. Yeah, that is a good question. Why they have added 0? So let me explain quickly. So ये जो भी पॉलिनोमियल है उसे हमें फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो इसमें से जिसका भी पावर है, exercise 1. Okay, I will explain it. So okay, so I can explain the again the exercise 1, then we will go to the exercise 2. So again, I'm repeating here that whenever there is polynomial, right? So this is a polynomial. So we can write this polynomial in different way, like 4 plus 4x, but we have to arrange it in descending order. So what does it mean? So what is the highest index here? We know x square, right? 2. So ये हाईएस्ट इंडेक्स है. उसके बाद कौन सा टर्म होता है? 4x, बिकॉज इसका इंडेक्स क्या है? 1. और लास्ट में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो लिखते हैं. सो हमेशा देखना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है इट हैज रिटन इन दिस फैशन, राइट? फ्रॉम हाईएस्ट ऑर्डर टू द लोएस्ट ऑर्डर. यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है. ओके, सो हम देख सकते हैं कि 2 1 0. सो जो भी ऑर्डर है पॉलिनोमियल में वेरिएबल का, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना है. अभी ये देखिए, वेरिएबल का ऑर्डर है 2, यहाँ वेरिएबल का ऑर्डर है 1 और यहाँ 0. सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है. Similarly, whenever you see any polynomial, we have to try to arrange it in descending order so that it is useful for our division purpose. Okay, so as it was already in descending order, so we don't have to carry out that exercise again. हमें वो फिर से नहीं करना है. But in future any polynomial, हमने देखा था अभी exercise 2 में कि polynomial हमें इस प्रकार से descending order में लिखना है. So we have to be careful about order of the variable. So यहाँ x plus 2 है और x square plus 4x plus 4 है, right? So आपको हमेशा question होगा कि how to come up with first term, like how they have come up with x, right? So उसके लिए just simple thing. So x plus 2 है, right? और इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट क्या है अभी? एक्स स्क्वायर, राइट? तो एक्स स्क्वायर इज द टर्म विच वी हैव टू एलिमिनेट एक्चुअली फॉर द डिवीजन. सो एक्स स्क्वायर आने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स से, राइट? सो हमें इस बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म मिलेगी एक्स स्क्वायर.
होपफुली यू आर फॉलोइंग मी वेरी वेल। जो भी x+2 है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x से, सो फर्स्ट टर्म होगी x², राइट, प्लस 2x। अभी 2x तो हमें सेकेंड टर्म को देखना ही नहीं है, भले 4x हो या 6x हो, हमें 1/1 देखना है। तो इसके लिए हम आ गए इस टर्म से कि x कैसे आया। तो x+2 इंटू एक्स, बिकॉज हमें फर्स्ट टर्म जो भी है x² करना था। अगर इस x² की जगह 5x² होता तो मैं यहाँ 5x लेता, राइट। सो अभी इसको पाने के लिए हमने x²+2x लिखा। तो अभी x²+2x अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, 2x, राइट, ये, और x² तो निकल जाएगा, दैट विल बी द जीरोस। सो अभी क्या बचा, 4, ओके, 2x+4। सो अभी 2x+4 is the second term or second thing we have to carry out for the division. So यहाँ क्या करना है हमें, 2x+4 है पता है हमें, और हमें हमारा डिवाइजर क्या है, x+2। तो x+2 से 2x+4 आने के लिए क्या करेंगे हम, तो हमेशा पहला टर्म देखना है, x और 2x, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, राइट। इसके लिए हम देख सकते हैं ये दूसरा टर्म आया। सो यहाँ 2x+4 और यहाँ 2x+4 और ये रिमाइंडर 0। सो हमेशा टारगेट करना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसे हम एलिमिनेट कर सकें। अगर सेकेंड टर्म यहाँ अगर 2x+6 होता तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, सेकेंड टर्म के लिए जो भी रिमाइंडर आता वो हमें रखना पड़ता था, राइट। सो इस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप डिवीजन कैरी आउट करना है। सो आई विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, कि हमने यहाँ 0y³ क्यों लिया। So again, before going for any division, we have to arrange it in descending order. So ये हमारा पॉलिनोमियल है। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम, जो भी हाईएस्ट इंडेक्स वाला, हाईएस्ट ऑर्डर किसकी है, y⁴, राइट। उसके बाद 4 के बाद हमेशा 3 आना चाहिए, लेकिन 3 की कुछ टर्म्स दिख नहीं रही हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको 0y³ लिखेंगे, ओके। सो इस प्रकार से हम उस टर्म को ऐड कर रहे हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 0 टर्म है, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो संख्या वैसी ही रहती है, यहाँ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओके। ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो ऐड ही होगा, बिकॉज दैट इज द रूल कि किसी भी संख्या में हम 0 ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो ये हमारी वैल्यू एक्चुअली 0 है, बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग और हम उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए इसे रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, माइनस। अभी इसके बाद 3 के बाद क्या आना चाहिए, 2। सो जिसकी ऑर्डर 2 है वो क्या है, y², 10y², ओके। इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 के बाद 1 होना चाहिए, 24y। सो इस प्रकार से हमने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर है पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट किया। सो अब देखेंगे कि y+4, ओके। सो अभी हमेशा, अभी ये बाइनोमियल है, राइट। तो हमेशा पहले दो दो टर्म देखने हैं हमें। अगर यहाँ मोनोमियल होता तो हमें एक एक टर्म देखना पड़ता, अभी दो टर्म है तो हम यहाँ दो दो टर्म देखेंगे। सो y⁴, so someone is asking why we have to do this thing, which thing, like descending order or taking it two terms.
If you can explain me question. Oh, descending order. Sorry. So if you can do means if you do not carry out this descending order, that's fine. There is no such rule that you have to. But if you go for division, then how will you carry out all this stuff? Like suppose otherwise you have to be you have to be very expert in understanding this division. So suppose y plus 4, okay, y plus 4 into y cube. What it does give? Y4, y raised to 4 plus 4y cube. So if we do not put it in the descending order, this subtraction will be difficult for you. I am not telling that it is not possible, but it is difficult. So suppose this 24y is written here, right? I will take another color. Is 24 4y is written here, and you are going to subtract 24y and minus 4y cube. I don't know, means it is there, but you have to write this 4y cube exactly below the y cube so that you can carry out the subtraction. So इस प्रकार के सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम पहले ही उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं. ओके, सो दैट्स द आंसर. अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे तो भी ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू पुट दिस वेरिएबल. सो जहां भी y क्यूब है वो वहां रखना होगा. सो ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ y प्लस 4. सो फर्स्ट टू टर्म्स हम लेंगे. सो इसमें से जो भी हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है y रेज़ टू 4. सो y से y रेज़ टू 4 करने के लिए हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? y रेज़ टू 3. सो व्हाट इज द आंसर? y रेज़ टू 4 प्लस 4y क्यूब. सो दिस इज द आंसर. सो हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस 4y क्यूब. और ये जो दो टर्म है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ आएगी, बिकॉज देर इज nothing we are subtracting from those terms. So minus 4y cube minus 10y square plus 24y. Okay. So अभी second, अभी फिर से हम first दो term लेंगे. Then we will see that what is the highest order here? 3, right? So यहाँ y है और यहाँ minus 4y cube है. So अगर देखेंगे तो minus 4y cube divided by y, तो क्या आएगा? माइनस 4y स्क्वायर. सो हमें इसे माइनस 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, राइट? y plus 4 into minus 4y square. This is for just getting a quick answer. What should be the variable here? So for that purpose, we can see the first term. जो भी first term है उसका जो highest order है उसके अनुसार हम, और जो हमारा बाइनोमियल है उसका भी फर्स्ट टर्म लेके हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस 4y स्क्वायर आया. सो दिस इज द आंसर, माइनस 4y क्यूब माइनस 16y स्क्वायर. तो हम इसे डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर. ये टर्म तो चला जाएगा. सो whatever there is remaining is 6y square plus 24y. अभी 6y square plus 24y, राइट? सो इसमें हम क्या करेंगे? जो भी फर्स्ट टर्म है 6y स्क्वायर, सो y से 6y स्क्वायर आने के लिए हमें क्या करना होगा? 6y से मल्टीप्लाई करना है. इसीलिए हमने लास्ट टर्म लिया y प्लस 4 इंटू 6y, एंड वी विल गेट द आंसर 6y स्क्वायर प्लस 24y. सो 6y स्क्वायर प्लस 24y अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इज 0. So this is the way we generally carry out this division. Okay.
So if you have any question, you can ask here. Okay, so till now we were expecting that remainder is 0, but this is the problem. We can already see that remainder is 10x, so we can we can carry out the division here. So again, this is the polynomial. First, we will try to arrange it in descending order so that it will be easy for carrying out the division. So, so this is see 6x raised to 4 is first term. Then second term is like 3 5x cube. Then 3x square order is 2. Then 5x order is 1. So 4 3 2 1, and here for this order is 0. Okay, so after arranging in the descending order, what we will do, we will carry out the division. So we will start with first term. So first term is 6x raised to 4. And what is the first term here in binomial? So it has to be like binomial also has to be in descending order. If it is not mentioned, I'm giving you an example. If it is written like minus 1 plus x square, so be careful that you are keeping it in descending order like x square minus 1. So divisor also need to be in descending order so that it will be in so that it will be easy for carrying out the division. Okay. Mm, so x square minus 1 is divisor, and this is the whole polynomial, and we are targeting only first term for time being. So x square, and we know the answer is 6x raised to 4. So for that purpose, we need 6x square. From x square to getting 6x raised to 4, we need 6x square. So x square minus 1 into 6x square gives us the answer 6x raised to 4 minus 6x square. Okay, so here the difference like x square minus 1 like 2 1 0, so we do not have in between anything or any value. So some people, I will give you an example, so they carry out in this fashion also. So plus 0 x cube, sorry, 0x minus 1. So if we multiply this into 6x square, what is the answer for us? 6x raised to 4 plus 0x cube minus 6x square. Though it is a binomial, we converted it into polynomial, and this way we can write it here 6x square 6x raised to 4 plus 0x cube, right? It is 0. So uh, it so this is the way uh, we have to carry out the division for easier for easy way, right? So always we have to see that how very easy way we can solve this problem. So this is also one way, but as they have not done here, I don't want to confuse you guys, but yeah. So here x square minus 1, we have taken 6x square, हमने 6x square लिया. तो what is the answer? 6x raised to 4. So और 6x square. So हम अगर इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, so हम देख सकते हैं कि हमें 6x raised to 4 और ये जो आंसर आया है, we have to match with
ऑर्डर, राइट? x रेज टू 4 और उसके नीचे ही x रेज टू 4 लिखना है, माइनस 6x² हमने इसके नीचे ही लिखा, राइट? We didn't write it here. So someone is asking question, yeah, so student is asking question like why we have written 0x. So this is for just for easier calculation, nothing related to -1. So this will give us the answer like 6x raised to 4 plus 0x cube minus 6x square, right? So we can write it here that 0x cube. So it will be easier for calculation. You don't have to see that where we have to write, we have to find. If you write it directly here, we will get the answer like this is 0, right? Anyway, so 5x cube will directly come here. 6x raised to minus 6x raised to 4 minus 6x raised to 4, it will give us 0, and the remaining is like 9x square. Here we are not carrying out any subtraction, so those term we can directly write here. Okay, so इस प्रकार से हम कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं. इसके लिए मैंने 0x लिया था, बट एज here they are carrying out without 0x. That is the one way I have shown you. It is not always मैंने कहा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा बहुत सारे वेज होते हैं. सो विच इज़ द इजियर वे, यू हैव टू फाइंड इट आउट. ओके, और हम उस जो भी आंसर मिलना है या जो भी आंसर हमें कैलकुलेट करना है और उसे वैलिडेट करके देखना है. ओके, सो यहाँ हमने फर्स्ट टर्म जो है देख लिया, उसका आंसर मिल गया. तो दिस इज द रिमाइंडर हियर. सो फिर से हमें फर्स्ट टर्म देखना है, और ये है x रेज टू 2. सो x रेज टू 2 से 5x क्यूब आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5x, राइट? सो पूरा टर्म हमने 5x से मल्टीप्लाई किया. सो व्हाट विल बी द आंसर? 5x क्यूब माइनस 5x. सो ये देखिए 5x क्यूब यहाँ लिखा और 5x यहाँ. तो ये हमेशा एक बीच में टर्म हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसके लिए मैं 0x यूज कर रहा था. But it is not always whatever you feel easy way to carry out these calculations, you have to follow those stuff. आपको जो भी वे easy लगता है वहां से आप सॉल्व करना है. So again 5x cube minus 5x, so we will get the, if we subtract these values from these terms, we will get the answer 9x square plus 10x minus 9. So what is the order of this remainder? It's 2, or index of this polynomial is 2. And what is the index of our divisor? It's 2. So we have, still we have to carry out the division. Okay, so always please keep checking the इंडेक्स. जो भी इंडेक्स है हमें हमेशा देखना है कि रिमाइंडर के बाद कि क्या है इंडेक्स. Okay, so whatever the remaining is 9x square plus 10x minus 9. So we can go further for the division. So फिर से x square और first term है 9x square. So we have to multiply by 9 and we will get answer 9x square minus 9. Some again question is there like why sine if 5x. Okay, so oh, this sign, okay, so why, okay, I will give you a brief answer. So if we multiply x square minus 1 into 5x, we will get the answer 5x cube minus 5x. So 5x cube
we have written here, and minus 5x. Okay, so generally from this term which is written here on the top, right, जो भी टॉप में पॉलिनोमियल लिखी है उससे हम जो बॉटम में लिखी हुई टर्म है उसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो सब्ट्रैक्शन के समय जो भी वैल्यू है, जैसे 5x³ इसकी जो साइन है वो क्या है, प्लस, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, राइट. और जो भी नेगेटिव है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. ओके, सो अभी जैसे हम 5x, ओके, माइ सॉरी माइनस -5x, right? What we do, 5x plus 5x, right? So ये जो साइन है, माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव. सो दिस इज द साइन हियर. ओके, सो इस प्रकार से ये साइन कैलकुलेट हुई और साइन लिखी गई है. Hopefully, I have cleared the doubt. So let's go further. 9x square plus 10x minus 9. So 9x square minus 9 जो हमने लिखा. So यहाँ भी देखिए, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था ये प्लस हो गया. So this is, we can deduct or we can do subtraction, and we will get a remainder as 10x. Okay, so इस प्रकार से हमें रिमाइंडर 10x मिला. और 10x का व्हाट इज द ऑर्डर और व्हाट इज द इंडेक्स, is 1, which is less than the 2, the index of device. Okay, so इस प्रकार से हमने पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन किया है. So just to give an uh, summary, while dividing a polynomial, the operation of division ends if the remainder is 0 or the degree of remainder is less than degree of divisor, right? जो हमने अभी देखा. If the term in the dividend are not in descending order, write them in descending order of indices, right? जो हमने देखा कि हमने किस प्रकार से indices, सॉरी, जो भी polynomial है उसे descending order of indexes में लिखिए. If any index term is missing, assume the coefficient of that term to be 0 and then complete the descending order. Okay, so हमने जो 0y³ लिया था उसे use किया, right, while putting it in descending order. So this is for easy way to calculate the division or carry out the division for the polynomial. We will try to solve some problem from 10.2 in next lecture. I know student has asked some question like 5 or 7, but yeah, it will be easy. We will carry out. You can try till next lecture. If you could not, then fine. I will explain in my next lecture. Till then, take care. Have a great evening. Uh, be careful, and stay happy. Okay. Have a great evening. Yeah.
think I can see some students, so please leave the class. I have to cancel the meeting.